Good morning, everyone. A very good morning to all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the ESE Officers Series for Engineering Services previous year questions. चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई. Come on, everyone. Join quickly. Everybody, we are going to start the ESE PYQ for Power Electronics session number 3. This is the third session for Power Electronics. So without wasting any time, let me get started. For a firing angle of 60 degree, in respect of a single phase half wave controlled rectifier with a resistive load supplied from 230 volt 50 hertz supply, what is average output voltage? Half wave controlled rectifier with resistive load. Good morning, Avnish. चलिए. So this is resistive load and it is single phase half wave. So beta, in half wave with resistive load, the conduction will go from alpha to pi. In resistive load ना conduction cannot go beyond pi. Resistive load में conduction कभी भी pi के आगे नहीं जाता because V naught cannot be negative. So 1 plus cos 60 is 1.5. So 77.65. So the answer is B. Correct? The answer is B. Okay, Parijat beta. The frequency of ripple in the output voltage of a three-phase controlled bridge rectifier depends on the ripple frequency of a three-phase bridge rectifier. Now this three-phase controlled bridge rectifier is 6 pulse converter. So output frequency is 6 into S. So it depends on supply frequency. It depends on supply frequency. A single phase full wave rectifier is constructed using thyristor. Peak value of sinusoidal input is Vm. Alpha is pi by 3. Average output voltage. What is the average output voltage? So V naught average it is not saying it is a resistive load. Alpha is pi by 3. I am assuming a highly inductive load. मैं यहाँ highly inductive load मान रहा हूँ. Pi is 3, so it should be 0.32. 0.32. A. Very good. Next, the main function of a freewheeling diode in rectifier circuit is to prevent the reversal of the load voltage. The freewheeling diode is never connected across the load. Which of these statements are correct? The purpose of freewheeling diode is to prevent reversal of the load voltage, and the freewheeling diode is never connected across the load. Which statement is correct?
Come on, everyone. Yes. See. So this is correct. See, what happens is freewheeling diode is connected anti-parallel to load. It is connected anti-parallel to load. So when V0 is negative, freewheeling diode gets forward biased and makes V0 equal to 0. It will become forward biased and it will make V0 equal to 0. So the second statement is false. And the first statement is true because when V0 becomes negative, then only it will make V0 equal to 0. जब भी V0 नेगेटिव जाने की कोशिश करता है, फ्रीव्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, वो आपका नेगेटिव रीजन को क्लिप कर देता है या नेगेटिव पोर्शन को जीरो कर देता है. A freewheeling diode in phase controlled rectifier. What does a freewheeling diode do? A freewheeling diode in phase controlled rectifier improves the power factor. How? It will clip negative portion of V0. It will clip negative portion of V0. Therefore, area under V0 increases. So average V0 increases. Average output voltage increases. So power factor, real power increases. Power factor increases. Power factor increases. Okay, very good. A three-phase fully controlled bridge converter is connected to a 415 volt supply having a resistance of 0.3 ohm and inductance of 1.2 millihenry. The converter is working in the inversion mode with the advance angle. Advance angle is actually 180 minus alpha. So alpha is 150 degree. What is the average generator voltage? DC current is given. Thyristor drop is given. DC करंट आपको दे दिया, थायरिस्टर ड्रॉप आपको दे दिया. बताइए, व्हाट इज द जनरेटर वोल्टेज? बोलो भाई. देखो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज at a time two thyristor conduct, so the drop of two resistances, because at one time two phases will conduct like A and B, B and C, A and C. एक समय पे दो फेज कंडक्ट करते हैं तो दो रेजिस्टेंस का ड्रॉप. एंड एट अ टाइम टू थायरिस्टर कंडक्ट, सो 2 VT. देन ड्यू टू इंडक्टेंस माय ड्रॉप इज दिस. इंडक्टेंस का ड्रॉप तो हम जानते हैं ना बेटा, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द सोर्स इंडक्टेंस. फायरिंग एंगल इज 150 डिग्री. IDC 60 एम्पियर. Resistance 0.3. Frequency is 50 Hertz. 1.2 millihenry into 60. So let us see.
Now such type of question require the use of calculator. So in exam without calculator, this will be very, very difficult. Minus 545.96. Minus 545.96. So closest option is A. The closest option is A. ठीक है, क्लोजेस्ट आंसर आपका ए आएगा. कौन बच्चा डी बोल रहा है? तमन्ना. तमन्ना बेटा डी कैसे आ रहा है बताओ. हाउ यू आर गेटिंग द आंसर एज डी? चलिए नेक्स्ट. The voltage developed across the off switch of a half bridge converter is the maximum DC link voltage. In a full bridge converter, the voltage across the primary of transformer is the DC link voltage. The voltage developed across the off switch of full converter is half of the maximum DC link voltage. बताइए. वो भी बेटा 240 से तो ज्यादा ही आना चाहिए था ना, मतलब नेगेटिव में. अभिषेक भाई देखो, बार के इंटरव्यू का कुछ देखो खास डिमांड है नहीं. ऑब्वियसली कुछ बच्चों को हेल्प की जरूरत होगी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. लेकिन आई हैव टू डू इनिशिएटिव्स व्हिच कैन हेल्प मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि देखो हर बच्चे की हर जरूरत तो नहीं पूरी कर पाऊंगा, तो ये देखना होता है कि कौन सी चीजें मैक्सिमम बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से प्लानिंग की जाती है. ओके, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द इन्वर्टर बेटा. इट इज टॉकिंग अबाउट द इन्वर्टर. The voltage developed across the off switch of a half bridge converter is the maximum DC link voltage. But it is half bridge converter और full bridge converter. ये तो सही है फुल ब्रिज कन्वर्टर में, क्योंकि जो V नॉट होता है प्लस माइनस VDC होता है एंड ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी will be connected at output of inverter. Inverter converts DC to AC. तो ट्रांसफॉर्मर विल बी कनेक्टेड ऑन द AC साइड. इन्वर्टर DC को AC में बदल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर तो AC साइड लगेगा ना, तो उसकी प्राइमरी पे ये वैल्यू आ गई. अब फुल ब्रिज इन्वर्टर में सपोज दिस इज माय स्ट्रक्चर. Now V naught is VDC, so the same voltage must appear here. VDC. In case of half bridge inverter, which voltage is VDC? So answer should be C option 1 and 2.
आंसर शुड बी सी ऑप्शन 1 एंड 2, क्योंकि देखो अगर यहाँ केवीएल लगाओगे ना तो वीडीसी आएगा, तो हाफ ब्रिज हो या फुल ब्रिज वोल्टेज तो वीडीसी ही आने वाली है, तो आंसर इसका सी आना चाहिए। ठीक है। A single phase 220 volt 1 kilowatt heater is connected to a half wave rectifier fed from 220 volt 50 hertz AC supply. Alpha is 90 degree. What is the power absorbed by the heater? What is the power absorbed by the heater? Heater is considered to be purely resistive. हीटर को प्योरली रेजिस्टिव माना जाता है, देयरफॉर पावर विल बी डिराइव्ड यूजिंग आरएमएस। देखो, वन वे इज टू यूज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस, बट मैं आपको उससे शॉर्ट तरीका बताता हूं। द शॉर्टकट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री। रेजिस्टिव लोड में ऐसे ही आएगा ना, कंडक्शन 90 से 180। इन आर लोड कंडक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड 180। तो एनर्जी ऑफ दिस इज हाइट स्क्वायर whenever you take one loop of the sine, when you take one loop of the sine, the energy is height square into duration by 2। ये आधा लूप है, इसीलिए एनर्जी आधी हो गई। अगेन लिसन टू मी केयरफुली, साइन का एक लूप लेते हो तो एनर्जी होती है हाइट स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन बाय 2। ये आधा लूप है तो एनर्जी इज ऑल्सो हाफ, तो इट विल बी 220 root 2 square, duration is pi by 2 upon 4, so pi by 8, 220 110 into 2, okay, power is energy by period, period is 2 pi, now the power in resistor divided by R. Now 1000 is 220 square by R. So if you take PR by 1000, take the ratio, just a minute, टू 24, अरे यार यहाँ पाई बाय 2 नहीं, यहाँ पे पाई आता, पहले मैं आधा कर चुका था। तो पावर विल कम आउट टू बी 250 वॉट डी। ये समझे, साइन के एक लूप का एनर्जी होता है हाइट स्क्वायर इंटू पाई, तो ठीक है, हाइट स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 होता है। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, हाइट स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2।
जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पाई बाय 2 ही तो आता, हाइट स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन बाय 2। एक मिनट रुकना यार, ड्यूरेशन तो पाई लेते तो यहाँ पे क्या आता, तो 110 आना चाहिए था। यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, नहीं तो 110 ही तो आएगा। एक मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? ये गलती, यहाँ पे 2 था, ठीक है, हाँ यहाँ पे 2 था, अभी सही है, यहाँ पे 2 था। पाई बाय 4 नहीं आएगा, मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पे ड्यूरेशन पाई लेते हैं साइन के एक लूप का, मैंने पहले ही उसको आधा कर दिया ना, मैं ड्यूरेशन भी आधा ले लूंगा तो गलत हो जाएगा ना। ये जो मैंने एनर्जी लिखी है साइन के एक कंप्लीट लूप की लिखी है, दिस एनर्जी हेयर बिलोंग्स टू वन लूप ऑफ साइन हुज ड्यूरेशन इज पाई, तो मैंने उसको पहले ही 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं ड्यूरेशन पाई बाय 2 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। A single phase fully controlled bridge converter is connected to a RLE load 220 volt 50 hertz supply, alpha is 60. The average value of the load current is nearly. What is the average value of the load current? Come on everyone. What is the average value of the load current? बोलो भाई। तो देखिए यहां पे assume continuous conduction. In that situation, RLE load behaves as RL load. Two 20 into 0.9 is 198. 198 by 2. तो आंसर इज बी, करेक्ट। यहां पे ये ध्यान रखना बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं, that 2 root 2 by pi is approximately 0.9. This will help you in calculations. This will help you in manual calculation. Next, in comparing the operation of a half controlled 2-pulse circuit, half controlled 2-pulse circuit means single phase semi converter, with that of a fully controlled circuit, that is single phase full converter. Okay. Now what is the question? Which statements are correct actually? कौन सी statement सही है? पहला statement, since half the thyristor are replaced by a diode, a half controlled converter costs less than fully controlled converter. Absolutely. In a semi converter we have 2 thyristor, 2 diode. In a full converter we have 4 thyristor. So in case of 2 thyristor my cost will be less. Due to freewheeling action with half controlled bridge circuit, power factor is higher होना चाहिए। सेमी कन्वर्टर में पावर फैक्टर हायर है और सेमी कन्वर्टर में डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। सेमी कन्वर्टर हैज मोर डिस्टॉर्शन एज कंपेयर टू फुल कन्वर्टर। फुल कन्वर्टर में हार्मोनिक्स आते हैं कम। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके,
फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँ, इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं दिया आंसर की में, मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। हम्म, तो एक सेकंड में आंसर की गलत देख रहा था। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे बेटा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेजोनेंट कम्यूटेशन? रेजोनेंट कम्यूटेशन, you can say class A, usually class B is called resonant commutation. Okay, but here in class A, to set up oscillation, क्लास ए में भी आप एलसी लगाते हो ना, बट क्योंकि क्लास बी जो है आपका ऑप्शन में ही नहीं है, we can choose to call it resonant commutation। वैसे तो क्लास बी को ही बोलते हैं, but since class B is not in the options, the next possible option could be class A. The next possible option could be class A. In line frequency phase controlled converter and single quadrant step down switch mode DC to DC converter, the output current can become, in line frequency phase controlled converter, अगर A और B दिया होगा तो B चूज करेंगे, and in single quadrant step down means buck converter, the output current can become discontinuous at light load. Light load means if I is low, inductor may completely discharge, leading to discontinuous conduction. Okay, that will happen if the current is low in both the cases. In single phase full wave controlled bridge rectifier with source inductance and the load, the output voltage during overlap is, what is V naught during overlap? What is the value of V naught beta during overlap? न्यूमेरिकल देख के लगता है नहीं हो पाएगी और सॉल्यूशन देख के लगता है आसान थी, इसको कैसे ओवरकम करें। फीलिंग को साइड रख दो भाई, तुम्हें फील क्या हो रहा है, तुमसे बनेगा नहीं बनेगा डजंट मैटर, यू हैव टू ट्राई इट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए ना तो फीलिंग चाहिए, ना तो मोटिवेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, इफ यू आर कमिटेड यू हैव टू सॉल्व, देन यू विल सॉल्व इट। द आंसर इज 0। ड्यूरिंग ओवरलैप all 4 SCR conduct. Therefore,
V naught is 0 because load will get short circuited. If a separately excited DC motor is to be operated in the first quadrant only, the converter is, which converter will you use for only first quadrant operation? If I just want the first quadrant operation, which converter will I use? Come on, everyone. Single phase, half controlled. Fully controlled is first and fourth quadrant. Dual converter, all four quadrant. Four quadrant chopper, again, all four quadrant. Can only work as rectifier. Half controlled converter can only work as rectifier or operate the motor in motoring mode. यहाँ V0 I0 दोनों पॉजिटिव आते हैं. ये मोटर को सिर्फ मोटरिंग मोड के अंदर ही चला सकता है. A four quadrant chopper cannot be operated as. A four quadrant chopper cannot be operated as cycloconverter. Cycloconverter is AC to AC. Okay. So this is DC output. Yes, chopper has DC output. DC to AC. Yes, it can give. But AC to AC, it cannot convert. It cannot convert AC to AC. A voltage source inverter is used when source and load inductances are in a VSI. What is the source and the load inductance? Small and large. See, if source inductance is large, source becomes a current source. हम लोग ये कहते हैं ना, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में बड़ा इंडक्टेंस लगा दो, वो एक करंट सोर्स बन जाएगा. So if your source inductance is large, then your voltage source gets converted to a current source. Therefore, large source inductance is used in current source inverter. If L load is large, impedance is approximately therefore harmonics and current or I0 get reduced. By same logic, we must have capacitive load in CSI to reduce voltage harmonic. ठीक है. देखो VSI में क्या होता है बेटा, वोल्टेज की फोरियर सीरीज फिक्स है. In VSI, the output voltage is square wave. So the Fourier series of voltage is fixed. But current depends on the load. Now, if your load inductance is large, the nth harmonic in current is inversely proportional to n square. So harmonic will be reduced in the current. That is why we need large inductance in the load. In case of CSI, the current waveform is fixed. The current waveform is a square wave. So if we have a large capacitance in the load, the voltage harmonic will get reduced. So, and in case of source inductance, large source inductance makes the source a current source. So in CSI, we use large source inductance. In VSI, small source inductance. Okay, clear हुआ concept इसका? Concept clear है भाई? चलिए.
An ideal chopper operating at 500 Hz supplies a load having RL from a 60 volt battery. The mean value of the load voltage for on-off ratio. Now, what is on-off ratio? On-off ratio is also called as mark to space ratio. What is it called as? Mark to space ratio. So, T on is 4 T off. Now, duty cycle is so it is an ideal chopper. We will get 48 volt. We will get 48 volt. Simple. Boost regulator has an input of 5, average output of 15. The duty cycle is for input of 5 volt, average output of 15. What is the duty cycle? Come on, everybody. So V naught is B, 2 by 3. In a buck boost converter, what is the maximum value of switch utilization factor? In buck boost converter, what is the maximum value of switch utilization factor? See, what is the switch utilization ratio? Actually, it is V naught I naught divided by V switch peak into I switch RMS. Okay. So this value in case of buck boost converter is root D into 1 minus D. For maximum, you will differentiate it with respect to D. So D will come out to be 1 by 3. So what is the switch utilization ratio? Two by 3 root 3. So the closest value is, this is 0.38. In case of buck boost converter, so the closest value should be 0.5. Closest तो यही नजर आ रहा है. Just let me check. It is given as D. एक बार मैं चेक करता हूँ और इसी तरह से निकाला जाता है स्विच यूटिलाइजेशन रेशियो.
अगर यहाँ पे आप पीक यूज करें, नाउ पीक स्विच करंट इज बेसिकली IL। देखो अगर इसको निकालोगे, VS dVS by 1 minus d I naught peak switch voltage, switch peak voltage in case of buck boost converter. Switch is connected here and the switch is off. जब स्विच आपका ऑफ हो जाता है, स्विच आपका बीच में रहता है, इधर स्विच होता है, इधर उल्टा डायोड होता है। स्विच आपका ऐसे लगा होता है, इंडक्टर ऐसे लगा होता है, इधर स्विच होता है। स्विच जब ऑफ हो गया तो इंडक्टर के अक्रॉस माइनस वी नॉट आ गया, वी स्विच प्लस वी नॉट होता है, VS प्लस वी नॉट होता है, और IL होता है I नॉट बाय 1 माइनस डी। तो 1 माइनस डी प्लस डी, 1 बाय 1 माइनस डी। इसको ऐसे कर लो, .25, ठीक है, डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा, V नॉट I नॉट बाय V स्विच पीक, I स्विच पीक। V नॉट in boost converter is dVS by 1 minus d, I नॉट is I नॉट। Switch peak voltage is VS plus V naught. Switch peak current is the inductor current I naught by 1 minus D. Okay. So that is how we derive it. The circuit shown in the figure is, the circuit shown in the figure is, what is this circuit? What does this circuit represent? क्लियर हो गया? अब आगे याद रखिएगा स्विच यूटिलाइजेशन रेशियो। Come on, what is this circuit? This is buck boost converter. When inductor is neither connected to the source nor to the load. Inductor ना ही source से जुड़ा है ना ही load से. It is hanging between the source and the load. It is a buck boost converter. For a step down DC chopper operating with discontinuous load current, what is the expression for the load voltage? Discontinuous load current, what is the expression of the load voltage? Okay, but actually discontinuous conduction में ना but no such option, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अपन कंटिन्यूअस वाला चुन रहे हैं, वरना D by बीटा VS होता है। An ideal chopper is operating at 500 Hz from a 60 volt battery. Resistance, inductance. Now the on-off ratio is 1:1. And what is it asking? What is the average load current? Average load current for a on-off ratio of 1:1. चलिए, for a on-off ratio of 1:1, what is the average load current?
What is the answer? 10 ampere. So T on by T off is 1:1. So this will be 1/2. Ten ampere. Very good. A 10 ampere. A two-quadrant DC to DC chopper can operate with which of the following condition? Okay, which conditions can a two-quadrant chopper operate with? A two-quadrant chopper can operate with which of the condition? These are the options. So, first quadrant and fourth quadrant. So the answer should be B, 1 and 2. बट फर्स्ट और सेकंड में भी कर सकता है. अगर टू क्वाड्रेंट चॉपर की बात करें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है. वैसे फर्स्ट और सेकंड में चॉपर में आता है क्लास सी चॉपर के अंदर, तो आप इसका ना सी आंसर लिखिए. It is a combination of class A and class B. So it will operate in first and second quadrant. Buck converter has a input voltage 12 volt. The required output voltage is? I think this question is incomplete. Just a minute. Let me check. What should be the complete question? And required output voltage is 5 volt. What is the duty ratio? If input is 12 volt, required output is 5 volt, what is the duty ratio? 5/12. V naught by V in. Correct? A DC to DC transistor chopper is supplied from a fixed DC source with a fixed RL load and a freewheeling diode. The chopper creates 1 kilohertz. Without changing the value of average DC current, it is desired to reduce the ripple current. I don't want to change the average, but I want to reduce the ripple. The ripple in the inductor current is and average. Okay. So I don't want to change the average, but I want to reduce the ripple. So I need to increase the frequency, keeping the duty cycle constant. If I increase frequency and not change the duty cycle, the ripple will reduce. In DC chopper, the waveform of input and output voltages are the waveform of V in and V naught are. In a DC to DC chopper or DC to DC converter, continuous and discontinuous. Input voltage is a DC source. Input voltage is a DC source, so it is continuous. The output voltage is a chopped waveform, so discontinuous. What is the waveform of current flowing through the diode in a buck boost converter? What is the waveform of the current flowing through the diode in a buck boost converter? The answer is trapezoidal.
Basically, diode carries the discharging part of the inductor current. The diode carries discharging part of the inductor current. Like this. So this is trapezoidal. Correct? Diode current versus time. A forward DC to DC converter requires a minimum load at the output. Without minimum load, the excess output will be produced. Without minimum load means कि कम से कम एक certain load लगना जरूरी है. तो आंसर इज करेक्ट. फॉरवर्ड कन्वर्टर अगेन बेटा एसएमपीएस के अंतर्गत आप पढ़ते हैं. फॉरवर्ड कन्वर्टर. तो what it is saying is कि if you do not connect up at least a certain amount of load, अगर एक certain amount of load नहीं लगाया गया तो V0 बहुत ज्यादा हो जाएगा. उसका रीजन ये होता है कि ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स को अपोज करने के लिए कोई नहीं आएगा. तो ये जो एसएमपीएस के कन्वर्टर होते हैं इनके अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है. इफ यू डू नॉट अपोज द फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी, द वोल्टेज विल बिकम वेरी हाई. Which of the following regulator provide output voltage polarity reversal without a transformer? किसका वोल्टेज रिवर्स मिलता है बिना ट्रांसफॉर्मर लगाए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. In which converter the voltage is reversed without even connecting a transformer? बताइए. Buck boost converter. V0 and Vin always have the opposite polarity. For the step up operation, what is the condition for controllable power transfer? For step up operation, बताइए भाई. What is the condition for step up operation? Input is less than output. Input is positive, but input is less than output. अच्छा देखो, मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा समझा दूं. कुछ बच्चों को नहीं क्लियर हुआ होगा. एसएमपीएस आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो. फॉरवर्ड कन्वर्टर, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मर. ओके. In that transformer, when the switch is on, the supply is connected to the primary. So primary absorbs energy from the source. Okay. And when the switch is off, the secondary delivers energy to the capacitor. तो एक साइकिल में जब स्विच ऑन होगा 0 से dt, प्राइमरी एनर्जी ले लेगी सोर्स से. dt to t, secondary will deliver energy to the load. Now in this process, the voltage across the capacitor or the capacitor will charge. If there is not a certain minimum amount of load current, the capacitor cannot discharge through the load. अगर कम से कम एक certain load current नहीं होगा तो लोड पे जो कैपेसिटर लगा है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, उस पे चार्ज रह जाएगा. अगली साइकिल में फिर से जब कैपेसिटर चार्ज होगा, अगेन द वोल्टेज विल इंक्रीज. So voltage will keep on increasing and it will be uncontrolled. So capacitor will hold a certain charge. If the load current is not at least a certain minimum value, the capacitor is not going to discharge, due to which it will keep on increasing the charge and there will be a voltage runaway. Next, a chopper circuit is operating on TRC control. TRC is time ratio control, where basically duty ratio is varied.
Output voltage 170, conduction and the blocking period. Point 386 millisecond. Blocking period is 0.114. बक कन्वर्टर ड्यूटी साइकिल ये तो हम कर चुके 5/12 correct. In a DC motor drive, if the current is reversed by keeping the field current positive, producing a braking torque, then the drive is said to be operating in. आप फील्ड करंट सेम रख रहे हैं, आर्मेचर करंट रिवर्स कर रहे हैं, तो किस मोड में ये काम कर रहा है? द फील्ड करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, आर्मेचर करंट इज रिवर्स्ड. व्हाट इज द मोड? रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड. Motor acts as generator and delivers current. Motor acts as a generator and delivers current. In a DC to DC switch mode converter, if the output voltage polarity is opposite to the input voltage, then the inverting regulator is called. If V0 and Vin have opposite polarity, what is that converter? It is buck boost regulator. Simple. Buck boost regulator. ये अभी हमने बात की थी. In a 110 volt DC chopper drive using CLC scheme, maximum possible accelerating current is 300 ampere. The lower limit of the pulsation is 140. What is the maximum limit? What is the maximum limit? Maximum current is 300. The lower limit of current pulsation is 140. Just a minute, let me check. क्वेश्चन का लैंग्वेज ही कुछ अटपटा सा लग रहा है. CLC is current limit control. इसका आंसर क्या दे रखा है? तो बेसिकली 440 दे रहा है ये. लोअर लिमिट ऑफ करंट पल्सेशन 440 दे रहा है. 300 प्लस 140 कर दिया इसने. यार इसका कोई सेंस तो बन नहीं रहा. 300 प्लस 140 कर देने का सीधे सीधे, क्योंकि मैक्स और मिन दे रखा है. करंट के लैंग्वेज में लिखा है कि मैक्स और मिन है.
या तो ये मिनिमम लिमिट बोलता ना मैक्सिमम की जगह। यहां पे पता है क्या गलती है, इसको ना ये चीज मिनिमम बोलना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन मिनिमम। देन तो सिंपल है, आई मीन प्लस डेल्टा आई इज बेसिकली योर आई मैक्स। तो क्वेश्चन में ये तो गलती है, ठीक है, इसको मिन बोलना चाहिए था। A boost converter has an input voltage of 20 connected to a R load. L is 1 millihenry, R is 0.1 ohm. If the duty ratio of converter is 1, then the output voltage is, if the duty ratio of converter is 1, then the output voltage is, देखिए, when inductor has a series resistance, then at duty cycle equal to 1, V naught is 0। तो बूस्ट कन्वर्टर का फॉर्मूला क्या आता है तब? ओके, तो आंसर विल बी ए, 0 वोल्ट, क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है। नाउ a DC chopper is connected to a 100 volt DC source, has a inductance and a resistance. Freewheeling diode is connected across the load. The current varies between 10 and 12. What is the time ratio? That is the duty ratio of the chopper. I need the duty ratio of the chopper. बट ड्यूटी रेशियो 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। आई थिंक इट माइट बी आस्किंग टी ऑन बाय टी ऑफ। टाइम रेशियो इट माइट बी आस्किंग टी ऑन बाय टी ऑफ। देखो, आई नॉट एवरेज इज मैक्स प्लस मिन बाय 2। 11 एम्पियर। तो आंसर शुड बी सी, 1.22। Consider a buck converter with a controlled switch as MOSFET and uncontrolled switch as diode. Input to the buck converter is 60 volt. MOSFET is turned on for 20 microsecond, turned off for 10 microsecond. Output voltage of the buck converter. Find output voltage of the buck converter. Come on, everybody. So duty cycle T on by T on plus T off. Forty. Okay, the answer is 40. Consider the following statement related to DC to DC converter. The polarity of output and input voltage of a single-ended primary inductance converter is opposite. The polarity of output and input voltage of a choke converter is opposite. Polarity of output and input voltage of buck boost converter is same.
Input voltage of a boost converter is same. Single ended primary inductance converter. सिंगल एंडेड मुझे लगता है बक बूस्ट कन्वर्टर की बात कर रहा है. ये बक कन्वर्टर की बात कर रहा है. यहाँ बक बूस्ट आ गया, बूस्ट तो बक की बात कर रहा होगा. टू कन्वर्टर में अपोजिट आता है तो इसका डी होना चाहिए. सिंगल एंडेड प्राइमरी इंडक्टेंस. प्राइमरी इंडक्टेंस मींस इंडक्टेंस विद सोर्स. व्हेन बट इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन लोड ना. सिंगल एंडेड तो बक कन्वर्टर की किस तरह से बात कर रहा है. सिंगल एंडेड ठीक है. यहाँ पे इंडक्टेंस का एक एंड जो है लोड से कनेक्टेड होता है तो सिंगल एंडेड. ए चूक कन्वर्टर बेटा आपका जो है ना एडवांस टॉपिक्स में आता है, एसएमपीएस के अंदर आता है. अस्दाक बेटा उसके लिए आपको अपने टेलीग्राम मोबाइल ऐप पे बैच ओपन करना होगा. तो वंस यू ओपन द बैच इन योर मोबाइल ऐप यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक बिसाइड द कंटेंट टैब. चलिए मैच करना है वेवफॉर्म को. क्या क्या ऑप्शन है. सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड एसी टू डीसी, वोल्टेज कम्यूटेटेड डीसी टू डीसी चॉपर विद इनपुट वोल्टेज ई, फेज वोल्टेज ऑफ अ थ्री फेज रेक्टिफायर इन्वर्टर विद 180 डिग्री कंडक्शन, line voltage of a three phase inverter with 120 conduction and input voltage E, three phase diode bridge rectifier. So this is the three phase diode bridge rectifier beta. This is the phase voltage with 180 degree conduction mode. This is a single phase fully controlled AC to DC converter. Line voltage with 120 degree conduction, voltage commutated chopper with input voltage E. यार ये लाइन वोल्टेज तो आता है लेकिन 180 डिग्री मोड में ऐसा आता है. लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज, और यहाँ 120 दिया है. हमारा क्या बन रहा है 315 और ये आना चाहिए. फिर ये 180 होना चाहिए यार. 180 में तो ये चल जाएगा. 180 का लाइन वोल्टेज ऐसा होता है, 120 का लाइन वोल्टेज इस टाइप से आता है. ठीक है. So that is the line voltage of 180 degree conduction. In case of voltage source inverter, freewheeling can be needed for a load of, for VSI. When will you need a freewheeling diode? When will you need a freewheeling diode? For inductive load. Okay, in inductive load only we will need a freewheeling diode to allow inductor to discharge. इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है, ये मैंने आपको कराया था डायक में फायरिंग वोल्टेज. ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं करा चुका हूं. PWM switching is preferred in VSI for the purpose of. Why do you prefer PWM switching? Why do you use pulse width modulation? To control output voltage, reduce the harmonics and reducing the filter size. देखो क्या होता है, by the method of PWM, lower order harmonics are eliminated, okay, and the harmonics that remain are of higher order. PWM से lower order harmonic हटा दिए जाते हैं, सिर्फ higher order वाले बचते हैं. And since the frequency of harmonics is high, the filter size is less. हमेशा याद रखना जितना हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग करना है उतना ही कम आपका फिल्टर का साइज होगा. The operation of an inverter fed induction motor can be shifted from motoring to regenerative braking. अगर इन्वर्टर से चल रही है इंडक्शन मोटर तो उसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में कैसे डालिएगा, बोलिए. हाउ विल यू मेक इट अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग? तो द आंसर इज सी. अगर आप सोचेंगे ए तो बेटा दैट इज प्लगिंग.
But if you decrease the inverter frequency, ns decreases, ns is less than nr, so the machine comes in generating mode. किसमें आ जाएगी? जनरेटिंग मोड में. Compared to single phase half bridge inverter, the output power of a single phase full bridge inverter is higher by a factor of the output power of a single phase full bridge inverter is higher than half bridge inverter by a factor of. The answer is C. For half bridge, since voltage gets doubled, power becomes 4 times. Power becomes 4 times. A DC source is switched in steps to synthesize the three-phase output. The basic three-phase bridge inverter can be controlled. The angle through which each switch conducts at any instant and number of switches conducting simultaneously are. ये थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर है, तो हर स्विच का एंगल और कितने स्विच एक बार में ऑपरेट करेंगे. फॉर 180 डिग्री मोड, 3 switches conduct together. 180 डिग्री मोड में ना एक बार में 3 स्विच चलते हैं. फॉर 120 डिग्री मोड, two switches conduct together. Okay, in a McMurray inverter, the diodes are connected in inverse parallel to the thyristor. Basically, thyristor will have an anti-parallel diode in a McMurray inverter. Why? To protect the thyristor, yes. To make the turn off successful or to make the turn on successful. Turn on successful. So answer will be A. 1 and 3. It will help you in turning on the thyristor and it will also help you to protect the thyristor. For this you have to learn McMurray inverter. ठीक है, ये सब ESE वाले टॉपिक्स हैं. मैं ESE वाले मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में ये सब कराता हूँ, McMurray इन्वर्टर वगैरह. चलिए, इन अ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, इनपुट वोल्टेज आउटपुट लोड दिया है RMS voltage at fundamental frequency. What is the RMS voltage at fundamental frequency? Half bridge inverter is this, na? 2 VDC by n pi sin n omega naught t. So V naught 1 RMS is root 2 VDC by pi, 48 into root 2 by pi. C. Correct? 48 into root 2 by pi. Next. A single phase inverter has a square wave output, fifth harmonic as compared to fundamental. What is fifth harmonic as compared to fundamental?
20%. 4 VDC by 5 pi, तो 20%. अच्छा, इसका ना करेक्ट करना यार, इसमें एक्चुअली ना 2 and 4 आना चाहिए, क्योंकि थायरिस्टर को डायोड रिवर्स बायस करेगा, फॉरवर्ड बायस थोड़ी करेगा, एंटी पैरेलल है ना. तो टर्न ऑफ में मदद करेगा, ठीक है. और दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट, इसका ये मतलब है कि व्हेन I lags V, तो when current reverses, diode helps in current flow. Okay, diode will help in current flow. ठीक है. तो क्या होता है, जैसे आपका एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं VSI की, अगर आप बात करो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ऑलवेज कंटेन्स फीडबैक डायोड, because whenever the load is like RL load, RLC load, so it will contain the current, the diode will carry the current for operation in second and fourth quadrant. Operate in second and fourth quadrant. So diode will help you in the operation of second and fourth quadrant. Okay, अब क्लियर है भाई आदित्य? चलिए. Which of the following statement is correct? A VSI is normally employed when आंसर इज ए. ये मैंने आज बताया था ना कि सोर्स में रिएक्टेंस कम होना चाहिए, लोड का रिएक्टेंस या लोड का इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए. करेक्ट. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. इफ द सोर्स हैज अ लार्ज इंडक्टेंस, द सोर्स विल बिकम अ करंट सोर्स. फॉर VSI, द सोर्स मस्ट हैव अ लो इंडक्टेंस and load must have large inductance so that your harmonics can be reduced. In a three-phase VSI operating in square wave mode is 180-degree conduction mode. So output line voltage is free from triplen harmonics. कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं? Which are the harmonics present? 6K plus minus 1. 6K plus minus 1. But remember, in pole voltage, at 180-degree mode, all odd harmonics are present. Okay. All odd harmonics are present in the pole voltage. The PWM inverter for control of AC motor is fed from which of the following? The PWM inverter will be fed from, you will feed the PWM inverter with the help of uncontrolled rectifier, because V0 can be controlled using PWM. When there is no PWM, control Vin to vary V0. जब आपके पास PWM ना हो ना, तो आप इनपुट वोल्टेज को ही अल्फा की मदद से कंट्रोल कर लीजिए. Basically, you apply the input with the help of a controlled rectifier, so that when you vary alpha, the output of rectifier or the input of the inverter will vary, and correspondingly, the output of inverter will vary. But when you have a PWM technique, then your input should be fixed, because you can vary output with the help of PWM. Next. Both VSI and CSI require feedback diode.
only CSI require feedback diode. GTO cannot be used in feedback diode. Only VSI requires feedback diode. Which statements are correct? So, CSI does not require feedback diode. So, first statement is incorrect. Okay, second is also incorrect. GTO can be used. Usually in CSI, we use thyristors. So, GTO can be used. So, answer is D. So, the answer is D. Fourth only. Okay. GTO, why can we use GTO? Because we use thyristors in CSI. तो अगर SCR यूज कर रहे हैं तो GTO can also be used. ठीक है, इसका आंसर मेरे हिसाब से डी आना चाहिए. सी दे रखा है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूं. GTO यूज तो होना चाहिए यार. लेट मी जस्ट चेक. हाँ, GTO लग सकता है यार CSI में. A single phase CSI is connected with a capacitive load. The waveform of output voltage for constant source current. For a capacitive load, what is the output voltage waveform in case of CSI? In case of CSI, triangular wave. देखिए I नॉट क्या होता है? I नॉट इज अ स्क्वायर वेव. तो V नॉट this will be a triangular wave. Okay, this will be a triangular wave. फुल ब्रिज इन्वर्टर में पूछ रहा है भाई आउटपुट आरएमएस एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अभी ऐसा ही क्वेश्चन हाफ ब्रिज का कराए थे. फुल ब्रिज में आउटपुट वोल्टेज आरएमएस एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज फंडामेंटल आरएमएस. फोर VDC by n pi sin n omega naught t for RMS we will divide by root 2. So answer is A. Very good. The answer is A. Okay. A VSI is normally employed. This we have already seen when source inductance is small and the load inductance is large. A CSI is obtained by inserting a inductance in series with a DC supply. If inductance is large, the current becomes constant. So voltage source gets converted to a current source. Right? Multiple PWM is used to reduce the harmonic content in inverter. The higher order harmonic can be easily filtered using passive filter. कह रहा है मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं हार्मोनिक घटाने के लिए और हायर ऑर्डर हार्मोनिक आसानी से हटाए जा सकते. So the answer should be B. Because both statements are correct. But the second statement is not explaining the first one. क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक गायब ही हो गए. सेकंड स्टेटमेंट फिल्टरिंग की बात कर रही है. मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन विल एलिमिनेट द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक इवन विदाउट फिल्टरिंग. बट आफ्टर मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन इफ यू वांट you can remove higher order harmonic using filtering. So the second statement will be additional to the first statement. तो आपके lower order harmonic multiple PWM पहले ही भगा देगा, फिर higher order harmonic के लिए आप filtering कर सकते हो. तो second statement first का explanation नहीं है. A PWM scheme is used. A PWM scheme is used to reduce THD by eliminating
lower order harmonic modest filtering means that filtering is easy for higher order harmonic. Correct? Filtering is easy for higher order harmonic. Sir, why is D incorrect? Because pulse width modulation does not increase higher order harmonic. PWM higher order harmonic बढ़ाती नहीं है, lower order को बस कम करती है. It does not increase any harmonic. Output current of a CSI remains constant irrespective of the load. Yes, I0 is equal to plus minus IS. The load voltage depends on the load. Correct. So the answer is B. बल्कि सेकंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टेटमेंट है, ना कि सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है. सोच के देखिए, करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज I इंटू Z, voltage will depend on Z if current is constant, not that कि voltage depends on Z, that is why current is constant. voltage Z पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए current constant नहीं है. current fix है इसीलिए voltage Z पे डिपेंड कर रहा है. A single phase VSI feeds a purely inductive load. The waveform of current, purely inductive load. What is the waveform of current? Very easy. Triangular. So V0 is a square wave. So I0 is 1 by L integral V0 dt. So it will be triangular. Correct? What is the frequency modulation ratio if MF harmonic, its odd multiple are to be suppressed in the line to line voltage? If you want to suppress the MF harmonic and its odd multiple, then MF should be odd. Modulation index should be odd if you want to suppress the harmonic. But एक बारी मैं check कर लेता हूं. You want to eliminate this harmonic. इस ऑर्डर के हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए MF का वैल्यू क्या लोगे? इसका आंसर सी होगा. ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा यार. ये डायरेक्ट रूल होता है कि if MF is a odd multiple of 3, then MF and its odd multiples are suppressed. Okay. For single phase full bridge inverter, RMS value of fundamental output component. ठीक है. This question just now we saw. Same as 55. Same as V01 RMS (48 into 2 root 2 by pi) 48 into 0.9 43.2. Which of the following core is used for a large main transformer to reduce eddy current loss of high frequency operation? Very easy question बेटा. हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे कौन सा कोर इस्तेमाल करेंगे? कंप्रेस्ड फेरोमैग्नेटिक एलॉय कोर. बेसिकली इन एलॉइंग इट विल बिकम फेरी मैग्नेटिक. मशीन में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये आप याद रखिए, हाई फ्रीक्वेंसी पे टू रिड्यूस एडी करंट लॉस. लास्ट क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ स्टैटिक ट्रांसफर स्विच in a multi-motor UPS system is to change over. What is the purpose of a switch in a multi-modal power UPS? Come on everyone. To change the power supply of critical load from UPS to power line. If there is any load which is very critical in the system,
You want to switch that load from UPS to the main power line. For that, you need a static transfer switch. Okay. Is that clear? You want to change the critical load connection from the UPS to the main line. Okay. मल्टी मॉड्यूलर का मतलब ये होता है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं यूपीएस के. ठीक है. मल्टीपल मॉड्यूल्स का मतलब है यू हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड. ओके. चलिए. So that's it for the day. Tomorrow we are going to meet again for another session of power electronics at the same time. So be ready, be prepared. I'll be meeting you again tomorrow at 11 a.m. Thank you.